Hello everyone, welcome back to Oliveboard regulatory bodies, and we are back again with our topper series. But this time we are bringing Nabard Grade A 2023-2024 toppers for all of you. So here we are having our first topper, Miss Nancy, and I welcome her because she is the first person to be on this topper series for Nabard Grade A. So many of the students who have been asking that they are going to shall they start preparing for Nabard Grade A for 2024? How do they start their preparation? So I think this video is going to be very important for their preparation also, as well as to motivate themselves in Nabard Grade A. Nancy, ma'am, I welcome you to the Oliveboard regulatory bodies as well as this topper series. And we will begin our discussion with a brief introduction of yourself. So, can you just let us know, our all audience, our Nabard aspirants, about yourself, your educational background, and one important thing you add up, that why did you started preparing for Nabard? That would be the first thing I will be asking to you. Yeah. First of all, I would like to thank you, sir. Thank you for giving me such a nice introduction. And sir, about myself, sir, I have completed my schooling from Ranchi. Thereafter, I moved to Banaras to pursue graduation in statistics from Banaras Hindu University. And since passing out from graduations, I was continuing my preparation for UPSC. And after giving one to attempt in UPSC, I decided to look on other options too. And Nabard is such a good opportunity that Nabard gives, that you can also contribute to the society as well. That's why, sir. That's a brief introduction, sir. Okay, so as you graduated, as you passed out from Banaras University, you did your graduation, if I'm not wrong, you did it in statistics, am I right? Yes, sir. तो स्टैटिस्टिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट इन माइंड? बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, एंड अ फ्रेशर लाइक यू, व्हाई डिडंट यू गो आफ्टर एनी जॉब? आपने ये क्यों सोचा कि नहीं यार, आई विल प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? तो ऐसा क्यों डिसीजन लिया? वाज देयर एनी ड्राइविंग फैक्टर फॉर दैट? सर, गवर्नमेंट जॉब का मेरा चॉइस इसलिए था क्योंकि सर मेरी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और एक होता है पेरेंट्स का एक सपना भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब हो। सर, एक गवर्नमेंट जॉब से आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन को जान सकते हैं। तो वो भी एक मेरा पर्सनल मोटिव था कि मैं भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ूँ, गवर्नमेंट के साथ काम करूँ। और एक तो मेरे पापा का भी जो सपना था सर कि हाँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए बेटी। तो सर, वो सपना के कारण ही मेरा नबार्ड और यूपी से टप गया। Yeah, it is true, it is true. Aspirations बस स्टूडेंट्स के नहीं होते, फैमिलीज के होते हैं, एंड यू मेड इट ट्रू. आपने एस्पिरेशन एक्चुअली यू मेड इट ट्रू, and it is actually wonderful to see such success stories when such aspirations are there, not from one but whole family itself. Yes, sir. So uh, as you were preparing for NABARD, आपने NABARD के साथ साथ क्या कोई और एग्जाम्स भी दिए थे while preparing? सर, इनिशियली तो मैं यूपीएससी दे रही थी सर, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ नबार्ड. Sister B is an elder sister. She is from agriculture. She has an agriculture. Through that, I know about there is a Nabard and where I can use my statistical knowledge also. And sir, तो वो मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे नबार्ड पे फोकस करना चाहिए. और सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने नबार्ड का उतना सोल फोकस नहीं किया था, बस इस अटेम्प्ट में अपना सोल फोकस किया, डेडिकेटेड एफर्ट किया नबार्ड के लिए सर. फिर यूपीएससी आई लेफ्ट एंड आई वाज सोली फोकस ऑन द नबार्ड. ओके सर, जो पहली बार आपने नाबार्ड दिया, मे बी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एज यू गिव मेंस आई थिंक, सो उस टाइम पे what did you think? How did you again recalibrate yourself as well as re-strategize? Please tell the mentality, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 1 साल या फिर 6 महीना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्लियर कर लूंगा और आगे देखेंगे क्या होता है. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इतना गुडी सिचुएशन नहीं होता है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि 2 अटेम्प्ट दे रहे, 3 अटेम्प्ट दे रहे, एंड दे शो देयर रेजिलियंस एंड दे क्लियर. व्हाट वाज योर मेंटालिटी? Please you tell this to students. I think it is very important. Yes sir. सर, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नबार्ड का और उसमें नहीं होता है सर, तो एक डीमोटिवेशन तो आता ही है सर. आपको लगता है कि इतना मेहनत किया, इतना किया, अभी भी कुछ नहीं होगा,
क्या अगले साल में भी होगा कि नहीं होगा, क्या हमें करना चाहिए। पर सर हमें वो अपना फेलियर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग का हार गए। हमें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुंचे, हम यहाँ तक पहुंचे जिसका मतलब हमें कैपेसिटी है, वी आर कैपेबल। अगर हम कुछ अपना मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे, अगेन करेंगे, तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। Definitely. So let's now dig deep into the preparation and strategy, यस because most of the students would be looking for that only, of course, and they'll look up to you जो भी आप बताओगे. So कैसे अप्रोच किया ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए? हम सबको पता है कि फेज 1 है, फेज 2 है और इंटरव्यू है, सर। लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमें इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा फेज 1 के लिए भी फेज 2 के लिए भी. तो आपका क्या था स्ट्रेटजी ओवरऑल? एक डेली रूटीन भी बता दीजिए आपका. यस सर। सर फेज वन जो है सर, उसमें सेक्शनल होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स आते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं। और सर एक होता है जिसका मार्क्स एडअप होता है, ओवरऑल को क्वालिफाई करना होता है, जैसे एआरडी, एएसआई और जीए जो होता है, उसमें आपको वो आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो आपका फेज टू में भी काम आता है और इंटरव्यू में भी काम आता है वो। True. सर उसको तो आपको डेली पढ़ना ही चाहिए आपको सर। एआरडी या ईएसआई हो गया, और करंट अफेयर जो पीआई, उसके लिए लोग पीआईबी देखते हैं, तो पीआईबी हमें रोज देखना ही चाहिए। असल अगर बात करें हम लोग जो कि एडअप नहीं होता है, जो कि हमारा क्वालिफाइंग होता है सेक्शन में, डिसीजन मेकिंग आ गया, और फिर क्वांट रीजनिंग आ गया, इंग्लिश और कंप्यूटर आ गया, तो Yes. उसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज लगा ले। अगर टेस्ट सीरीज रोज प्रैक्टिस Hmm. करें और उस पर वर्क करें तो बहुत बेटर होता है सर। जैसे कि Yes. सर मैंने ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट आता था, नबार्ड का लाइव टेस्ट, तो मैं उसे करती थी, मैं उसे Great. रेगुलरली करती थी। यस सर। Great. Great. So for phase 1 per se, I'll ask you one more sub question. 8 subjects are there for phase 1. यस Uh, सर। ना आरबीआई में भी 8 subjects नहीं है, ना ही सेबी में है. तो इट यस बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि 8 subjects को कैसे हैंडल करे. तो यस। डेली रूटीन में क्या क्या चीजें एक स्टूडेंट को ऐड करनी चाहिए, एंड हाउ मच आर प्रिपरेशन, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दिस? सर पहली बात तो कि जो एक सोर्स आप डिसाइड कर लिया, आपको जो भी सोर्स सही लगा कि आप उसको समझ में आप पा रहे हैं, उसे स्टिक करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप एआरडी का एक सोर्स है तो उसको ही पढ़ें और उसको सर रिवीजन करें, क्योंकि और सर ईएसआई का भी रिवीजन करना जरूरी है। और सर हम लोग क्वांट और डेली रूटीन का बात करें सर, तो हमें मतलब स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि आप एक रूटीन फिक्स्ड कर ले और एक रोबोट की जैसा कि रोज वही फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबल करें, जिसमें आपको लगे मुझे ये अच्छा हो सकता है, मुझे आज ये पढ़ने की जरूरत है, तो वैसे पढ़े सर, तो बेटर रहता है सर। यस. So overall, after phase 1, when you gone for phase 2, then what was the strategy? Because their descriptive answer writing came in, English answer writing came in. So यस can you tell some of our students that apart from reading books, revising, for descriptive answer writing, what were the steps which you took? सर फेज टू ही जो नबार्ड का मेन पार्ट है, क्योंकि फेज टू का ही मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है सर। फेज टू ही जो है, तो उसके में उसका जो इंग्लिश पार्ट होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, एसे आता है। तो सर हम लोग को ऑनलाइन टाइप करना होता है कीबोर्ड पे, तो इसके Yes. लिए हम लोग को ऐसा नहीं कि आप फेज वन के बाद इसका तैयारी करें, इसका तैयारी आपको करना पड़ता है सर। जो 3-4 महीने पहले आप तैयारी कर रहे प्रिपरेशन, तो हर रोज कम से कम एक भी आंसर लिखिए सर। आप चाहे इंग्लिश का या लेटर का एक भी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपका हाथ जो होता है वो बैठ जाता है कीबोर्ड में, और उसके आपका प्रैक्टिस हो जाता है, आपका स्किल आ जाता है, सब्जेक्टिव स्किल आ जाता है कि आप लिख सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फेज टू के लिए। एक भी करे तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए, पहले एक करे, फिर 2 आंसर करे, फिर 3 आंसर करे, वो सर बहुत जरूरी है। Okay, that's wonderful. Before going to resources and all, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. It is a myth which is related to Nabard Grade A, and you please demystify this myth. ओके Many सर। of the people think कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट होते हैं दे आर हैविंग एज इन नाबार्ड ग्रेड ए ओवर द नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. व्हाट इज योर टेक इन इट, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं है. Yes, sir. So even that question was asked in my interview, sir. कि ओके. आपका एग्रीकल्चर है और आपका स्टैटिस्टिक्स है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। भाई यस. सर जैसे कि सर हमारा जो इन कंट्री है हमारा, वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, और इसमें सर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसका कंट्रीब्यूशन बनता है अगर हम लोग को एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है सर। अगर बात करें एग्जाम की सर, तो वैसा कोई नहीं है कि सर एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। और अगर एग्रीकल्चर को स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ा जाए, तो भी नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बच्चे भी कवर कर सकते हैं। ये है सिर्फ कि वो भी कवर कर सकते हैं स्ट्रेटेजाइज से पढ़े तो उसको तो। डेफिनेटली. एंड
like other thing which I would like to ask is, what about the overall phase two answer writing when we are doing for essay, for pressy, are newspapers or maybe any external resources which are beyond books, are those essential? क्या उनके लिए वो चीजें रेफर करना like it is essential or not? सर नबार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए एक मेन पार्ट है कि आपको सोर्सेज बहुत कम रखने होंगे। अगर आपने सोर्सेज बहुत सारे रखे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर Okay. अगर हम लोग ऐसे की बात करें जो टॉपिक रिसेंट चल रहे होते हैं, जैसे कि इस बार टॉपिक एक तो सोशल मीडिया टॉपिक का जनरल टॉपिक था, पर एक था Yes. एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक। वो Yes. टॉपिक था वो बहुत रिलेवेंट था अभी के टाइम का। तो सर रिलेवेंट टॉपिक्स ऐसे के लिए और लेटर्स के लिए भी तो रिलेवेंट टॉपिक अगर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर से केबी में आते रहते हैं तो आपका कवर हो सकता है सर अच्छे से। Definitely. So how did you manage your overall time? आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया अलग अलग फेजेस के लिए, फेज वन, फेज टू? स्पेशली जब बात करते हैं कि एआरडी के लिए तो प्रिपेयर करना है, फेज वन के टाइम पे ईएसआई भी प्रिपेयर करना है, और फिर से व्हेन यू गो टू फेज टू अगेन देयर आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट सेक्शंस, फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो व्हाट वाज द ओवरऑल 6 मंथ, हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? हाँ, सर फेज वन का एग्जाम देने के जस्ट बाद आपको वेट नहीं करना है कि आपको रिजल्ट में क्या होगा सर। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपने फेज वन से पहले प्रैक्टिस किया है तो सही है, और अगर नहीं किया तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट होता है तो टाइम रहता है, लेकिन लोग खुद से टाइप करें। तो अपने घड़ी पे अपने टाइम लगा सकते हैं कि 1.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है तो हम टाइप उतना देर में ही करेंगे, और जितना 400 वर्ड का है या 300 वर्ड का है तो उतना ही लिखना होगा। आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा सर, डेली करना होगा फेज वन के बाद, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है सर। और टाइमर्स लगा लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली. What do you think, in your overall Nabard Grade A journey? What were the specific topics, or maybe what were the issues which were challenging in your overall preparation, and how did you come over those challenges? The first challenge that I faced was at a vast syllabus. It is a vast areas, even phase one. And so the online typing practice, that is also one of the challenges I faced in my preparation journey. एंड सर उसको ओवरकम करने के लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस के साथ और रिवीजन के साथ ही हो सकता है। और सर बेस्ट होता है कि आप स्ट्रेटेजाइज कर ले इसको कि आपको कितना टाइम किसके देना है, अपने वीकनेस और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे कि इंग्लिश जो था वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था फेज वन के लिए, और फेज टू के लिए भी जो मैं सब्जेक्टिव था, जैसे कि मैंने यूपीएससी में प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग, तो मैं स्ट्रॉन्ग एरियाज था। और जो वीक एरियाज हो गए जैसे करंट अफेयर्स, तो वो सब अपने हर किसी का अपना होता है, अपने अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए कि आपका कौन सा वीक एरिया जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है, और फिर वर्क करना चाहिए सर उसके अकॉर्डिंग। Definitely. So, other thing which I would like to ask is, uh, overall, as you were saying that syllabus is vast, so how much is revision essential, and how did you then plan your revision? सर रिवीजन जो होता है वो एक टफ टास्क होता है सर, बिकॉज आपको सेम थिंग बार बार पढ़ना होता है, सेम थिंग रिवाइज करना होता है। लेकिन सर क्योंकि रिवीजन ही आपका किया था, आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है सर, तो रिवीजन ही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा सर। जैसे कि मैंने जो रिवीजन किया था तो मैं जो एरियाज जैसे एग्रीकल्चर जो था, मैंने उसको मतलब 5-6 बार रिवाइज कर लिया होगा। एएसआई भी मैंने पढ़ा है क्योंकि यूपीएससी के दौरान ही पढ़ा था एएसआई, तो मैं ठीक था, मुझे समझ में आता था कि बेसिक्स क्या है इसका। तो करंट अफेयर्स है सर, क्योंकि पीआईबी से बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, फेज वन में बहुत सारे क्वेश्चन पीआईबी से आते हैं, तो उसको मैंने रिवाइज किया, उसको भी बहुत बार रिवाइज किया सर। तो हर किसी का रिवीजन कितना बार करना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 2 बार, तो मिनिमम तो 3 रिवीजन करके जाना ही चाहिए अगर आपके पास कम टाइम है तो। Uh, then, like after phase one, phase two, when interview preparation you started, so what was your overall experience, and how did you prepare for it? सर इंटरव्यू के लिए सर एक तो सर ये रिजल्ट आया था बहुत दिन बाद, पर आपको उसका भी उसका वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको भी इंटरव्यू के नबार्ड वेबसाइट का, नबार्ड का एनुअल रिपोर्ट, स्टेट फोकस पेपर, ये सब पढ़ना है। ये सर ये लगते हैं कि एक दो ही है, पर आप जब इसको पढ़ने लगोगे तो बहुत वास्ट है। नबार्ड के वेबसाइट को भी आपको बहुत वास्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको देखना होगा, आपको हर चीज नहीं पढ़ना है। जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेवेंट, जो आपका पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो पढ़िए। और मेन जो उसका वो होता है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, प्रीवियस ईयर टॉपर्स के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, उससे देखिए कौन से क्वेश्चन जो आपके रिलेवेंट है, आप उसको प्रैक्टिस करें।
उससे उससे पूछे और अपना एक सर डेली प्रैक्टिस मेरे घर में ही, अगर आपके कोई भाई बहन है, जैसे कि मेरी सिस्टर थी, वो मेरे से रोज लेती थी मेरा इंटरव्यू। तो अगर आपके घर में मेरे अगर भाई बहन नहीं है तो मिरर से ही प्रैक्टिस करिए रोज, और सर उसके बाद ही आपका अच्छे से हो सकता है। Any specific questions which were asked in your interview and which made them very interesting? And if yes, how did you handle them? Sir, mostly questions were related to my background, like what we were doing since 2020, and Okay. uh, and mostly was related to my statistics subject, and what is how sampling is done and how exit polls. So it was interesting questions how exit polls predicted the elections rightly. That was Oh, a question. nice. So that I handled. I tell about the sample representation and proper way of sampling. And so the last question in which they laugh also, that was the what is the probability of your success? What is the probability of your selection in this interview? That question Nice. that question they asked. So I tell them about that, and so they will ask me this minute. We also like to see you success in this interview, and that was my interview is over. So that was the last question that I asked. Seems to be very interesting. I think interview was very interesting. Yes, Uh, Tara so was very cordial, sir. They were very friendly, cordial in nature. yeah, related to that only I was going to ask. Many of the students also are having that uh, fear related to interview, that it is going to be in like intense, as well as they are going to be very strict, as well as there are various other things which are associated. It is a matter of pure luck, many students feel. What is your take on that? I think most you should give the answer so that many of the students are well aware about what actual the scenario is. So actually, I was also feeling a bit nervous, and I was also fearing that whether the panel will be cordial or not. But even when I entered and when they started talking, even they started with a smile, and all the questions they asked, they were like simply talking with me. It was like a simple conversation with the panel members. So that I will say that it is not about luck though, because the panels were so much experts in the taking interviews, so they don't want to create fear in the students' mind. They want to Exactly. have a friendly conversation with the students. So there's no reason to be fearful of them, and you should have your best personality that should be reflected on the day of interview. Okay. So, very important question I'll be asking to you. Maybe it is a little bit more related to golden words for student, maybe. So, competitive exams have not been sprints, but rather are marathons. They take a lot of your time, and it is an intense journey. So, how do you keep yourself motivated throughout the process? And also, how did you maintain your mental strength? Can you please elaborate on this also so that many students get an idea? So indeed, this question is very much important. So because it is true that competitive journey is a marathon, and you will face various ups and downs. Even in some you will get till the interview, but not selected or remains. So and depression will be there, sir. You will face upset, and there will be like even sir, there will be some negative feelings in you, sir. It is a journey because you have worked hard. It will become, as it is a human nature that it will become. Rather than thinking that I am facing depression, what will I do, sir? You have to focus on the positive side that I have done these things, and I know I have my confidence that I am capable of this. But sir, in my case, in spirituality, practicing meditations, believing in the gods that yes, if you are doing hard work, then God will give you fruits. So Definitely, that is the definitely. positive behavior, sir. You should have. True, true, true. Uh, what would you like to say about your overall journey for Nabard, and how what were your feelings when you saw your number in the final list? What was your feeling? Just let us know that. So the overall journey was long because it has been 2 years since I am preparing for Nabard, and on the day of my selection, that was so I was like I was just about to cry, sir. Even I didn't open my results, sir. It was my mother that she has opened the result, and I was just praying that maybe my preparation journey should have now have resulted in a good way. And so after knowing that my mom tell that yes, you had qualified, that the emotions, all the past emotion, all the past journey was reflecting in my mind, and that I get to know that yes, hard work always pays off, sir.
hard work always pays off. That was a Def- belief I again get. Yes, sir. definitely. We come to the end of the session, and my last question would be: what is your advice for the young students who are just be looking at NABARD as their opportunity, uh, especially who are attempting first time NABARD Grade A exam? So, what would you like to tell them? Sir, the main will be like strategies. In a bar can be cracked if a proper strategy is planned. If you know it, how much, what is the success? From in my case, I have known what are the successful cutoff are going on, so I have to practice that much. Like for quant, you don't have to go much deeply in that quant areas. So you have to know it how much is the successful cutoff, how much is we need to work on, how much we need to study. You don't have to go deep dive in the subjects. And if that strategy has been done in a proper manner, sir, and followed religiously and consistently, a student, a fresher can also crack Nabard, sir. Definitely. So, this overall session, if I look into, I think overall you really gave good insights as well as guidance for the students. More importantly, overall I could see your journey full of resilience, and more importantly, I think overall we could see that your hard work really paved in. And congratulations once again, and thank you for being there on this wonderful session. You actually made this session really wonderful, and I think most of the students would get real insights from this session. You may be an graduate student from any background. You Yes, may sir. be a student who have not attempted, or maybe you are new to Nabard Grade A. For all such student, I think they will definitely get inspiration from you, ma'am. And again, thank you for being there on this session. With this, we will end the session. And for all the students, I would like to tell that we'll come up with more such topper sessions for all of you for Nabard Grade A 2023-2024, so that you prepare for upcoming Nabard Grade A 2024. And ma'am, thank you once again, and congratulations. Hoping to see you and your contributions as a part of Nabard as an organization. Thank you, sir. Thank you, sir, for inviting me, sir. Yeah, definitely. Thank you very much, and we will see you next time. Thank you, sir.